Now, Ajay Gupta, arrested in the Birch by Romeo Lane fire case, is being produced in Goa Sessions Court. Saket Court in Delhi had granted 36-hour transit remand to Goa Police yesterday. I have Shahid Ansari joining me with more details. Shahid, इस नई जानकारी के बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड गिरफ्तार किया था और उसको दिल्ली की कोर्ट से जो है ट्रांजिट रिमांड मिली थी। उसके बाद रात में अजय गुप्ता को लेकर गोवा पुलिस जो है गोवा पहुंची और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने उसे 7 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म दिया। इसके पहले आपको याद होगा कि इसके पहले के जो 5 आरोपी हैं उन सभी आरोपियों को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई थी। तो अभी से कुल आरोपियों की संख्या 6 हो गई है। 5 आरोपियों को 6 दिन की पुलिस हिरासत और एक आरोपी अजय गुप्ता को आज जो है 7 दिनों की पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। अब बचे हैं 2 और आरोपी जो इस पूरे मामले में फरार है, जो फुकेट में जिनको हिरासत में लिया गया है और बहुत ही जल्द उन्हें गोवा लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक की बात करें तो उन्हें फुकेट के ट्रांजिट जो कैंप है वहां रखा गया है, जो वहां का और उसके बाद जो है जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद जल्द ही उम्मीद की जाती है कि 2 से 3 दिन में, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी कैंसिल हो चुका है और अगर पासपोर्ट उनका वैलिड रहता तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया और जल्दी हो जाती। लेकिन गोवा पुलिस ने सख्ती बरतते हुए पहले रेड कॉर्नर नोटिस, फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस, फिर उसके बाद उनके पासपोर्ट कैंसिल कराने की अर्जी दी और उनका पासपोर्ट कैंसिल भी हो चुका है। अब जो है ये सारी प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे ऐसी जानकारी मिली है कि ये लगेगी और उसके बाद जैसे ही ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद वह प्रत्यार्पण किया जाएगा। प्रत्यार्पण की प्रोसेस पूरा करने के बाद उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अभी तक की जो जानकारी मिली है उस जानकारी में ये पता चला है कि लुथरा बंधुओं को गोवा या तो सीधे गोवा या तो फिर जो है फुकेट से जो है मुंबई और मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट गोवा की होगी। इस दौरान उनको लाया जाएगा और फिर सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। अब तक की हालांकि इन 5 आरोपी है वो कर्मचारी है और जो 6वां आरोपी है अजय गुप्ता और ये 2 लुथरा बंधुओं को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद जो है सारी जानकारी या इनसे पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि इस क्लब में और कौन कौन से लोग पार्टनर थे और कौन कौन से लोग स्लीपिंग पार्टनर थे। ये सभी लोगों की जो है जांच होगी और उसके बाद संभव है कि गिरफ्तारी और ज्यादा हो। और इसके साथ साथ जिन सरकारी अफसरों को सस्पेंड किया गया है बताया ये जा रहा है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा संभव है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी शाहिद, बने रहिए मेरे साथ। And now I have Sanjay Sahai, former IPS officer, joining me on the broadcast. Now, Mr. Sahai, of course, this particular controversy has, of course, brought many other things to light, and just the fact that so many clubs and pubs operate without the licenses that they require, and no safety precautions are really taken. What do you have to say for that? See, I've been telling over and over again that this is a death traps which have been created, and it is a complete compromise sort of a situation as far as the licensing and regulatory mechanism is concerned. You start with the construction permit. Construction permit is missing. From there, you get into the tourist board, coastal zone compliances. So nothing is in place. And the fire tender could reach only 400 meters away from the accident spot or the fire tragedy spot. So let's understand it in totality that today if they do an audit of all the pubs, bars and these sort of entertainment facilities in Goa, I'm nearly convinced of the fact that 60 to 70% of these facilities will be having serious discrepancies with regards to permit, with regard to nature of construction, and with regards to the safety precautions, which should be or it is mandated. These are the authorities at the cutting edge level who have literally become servile. It is because of the high bureaucratic pressure or because of the political executive. They are not able to fulfill the jobs, or they are also cohorts with the same mechanism, and they are making all these things to happen. So this is broadly where we are. And I heard your correspondent talking about the government officials getting suspended, and they should also, or they are also being brought in the ambit of criminal conspiracy or criminal liability. So they are as big conspirators or as big suspects and accused as anybody else. Well, Mr. Sahai, of course, there are many, like we were mentioning earlier, there are many clubs and pubs operating still without licenses. What do you think should be a stringent measure here which would help in curtailing such activities? See, I've been telling over and over again that the first thing we need a white paper, we need an audit of all the pubs and all such entertainment facilities which is there in Goa. So if we have 500 of these establishments, I think neatly the database of all these establishments, which is
very easily doable in what we call as a digital India and everything on the digital mode. So when the whole thing comes to light as to, okay, pub number 3 does not have this license or that license, only then you will be able to act. Today they are operating in completely feudal and paternalistic style, wherein there is a committee of, I think, Collector North Goa. So they will sit and they will ask for documents, and the panchayat people will give documents. And this is more of a earlier style sort of a governance, which is not going to deliver fruits. It basically supports the well-knit mechanism of collusion. So it is primarily a total collusion which operates. I think somewhere the civil society or the tourists, I think they also need to react. If 6 months people don't go to Goa, I think they will fall on their own onwards, and they will start doing things which should be legally mandated. So one is that nature of boycott. Second is that the civil society, I think they have to come up in arms and they should dictate terms. Because who is getting disadvantaged? These 25 people died. And if nothing happens to the government officials, then the same issue continues for all times to come. We have been seeing from Upar tragedy to the current tragedy. So things have not changed. And they are trying to misuse the legal system also. Now these Luthra brothers, for their anticipatory bill application, they say that they have nothing to do with day-to-day working and the compliances of this particular pub. If they have nothing to do with these things, then why are they running this particular pub? They have nearly 2 dozens of these establishments and supposedly hospitality icons in this country. How they have been managing all these things, now all these things are becoming very, very clear. And the way they escape, with 11:39 p.m. this tragedy happening, and they escaped at 5:15 with 3 hours window before which you should reach for an international flight. I think they were dubious and devious from the beginning itself, and they had this plan B in place. The only bright spot is that they have been detained and things have happened at a fairly fast sort of a speed. And they should get into the whole extradition process, and we should be able to get them back as early as possible. But if we are not able to set right our house in order in Goa and in large number of other places, inclusive of Bangalore also has been trying to do the same thing. So this is where we stand, and such strategies will keep on happening, and most of these places will continue to remain as death traps. Absolutely, Mr. Sai. Not just in Goa, but in every city in India, there should be stringent measures in place so that these things do not happen again. Thank you so much for joining me on the broadcast. And now we're getting some more breaking news. Ajay Gupta, partner of Saurabh and Gaurav Luthra, the owners of the Birch by Romeo Lane club in Goa, where 25 people lost their lives following a massive fire, has now been sent to 7-day police custody. I have Shahid Ansari back with me. शाहिद, 7 दिन के लिए इनको पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, और क्या आप हमें बता सकते हैं? जी देखिए, जैसा कि पहले 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। एक आरोपी अजय गुप्ता है, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया और इसे ट्रांजिट रिमांड पर 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कल रात ही गोवा पुलिस जो है गोवा पहुंची है। आज इसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां कोर्ट ने इसे पुलिस को 7 दिनों की हिरासत में रखने का हुक्म दिया है। 5 आरोपी पहले, जिन्हें 6 दिन की हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया था, आज इसके अजय गुप्ता को इसको जो है 7 दिनों की हिरासत में रखने का हुक्म दिया कोर्ट ने। अब इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी हो गए हैं, जबकि 2 आरोपी जो है लुथरा बंधु, जो अभी भी फरार है, उन्हें फुकेट में जो है हिरासत में लिया गया है और कुछ घंटे में जो यहाँ लाने के जो प्रत्यार्पण की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, उसके बाद उन्हें भी लाया जाएगा। तो अब तक की जानकारी में कुल जो है आरोपियों की तादाद 8 है, लेकिन 6 गिरफ्तार हैं, 2 अभी फरार हैं। जब ये सारे आरोपी आ जाएंगे तो पुलिस उस दौरान जो है इन सभी लोगों से पूछताछ करेगी और फिर उसके बाद जो है एक दूसरे से जो है इनकी सामना होगा और उस दौरान ये पता चलेगा कि क्या इनके अलावा और कोई पार्टनर है। अगर और कोई पार्टनर है तो उसके दस्तावेज क्या है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ स्लीपिंग पार्टनर भी बहुत सारे होते हैं, तो इन सबको जो है देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रॉफिट होता था वो सभी लोगों के पास पहुंचता था। तो लुथरा बंधु को जो है गिरफ्तार करना और फिर उनसे पूछताछ करने के बाद ही अहम खुलासा हो सकता है। जी।